Hello everyone, welcome to my YouTube channel WebEx. So let's start our new topic. हमारा आज का टॉपिक है HTML entities. So let's begin with HTML entity. What is basically the HTML entity is? Some characteristics are reserved in HTML and they have the special meaning when used in HTML document. सो HTML एंटिटीज जो होती हैं वो HTML के कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, कुछ स्पेशल मीनिंग डिपिक्ट करने वाले कुछ इस तरह के सिंबल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कह सकते हैं कि आप ये वाला टैग विच इज द लेस देन टैग or the greater than tag or this angle bracket, you can't use this type of characters or this type of brackets or symbols within your paragraph or the text. आप ये यूज नहीं कर सकते HTML के किसी पैराग्राफ के अंदर, बिकॉज क्या होता है कि जब आप किसी टेक्स्ट के अंदर जब आप ये वाला सिंबल यूज करते हो तो HTML का जो ब्राउजर होता है वो समटाइम इसको रिलेट कर देता है HTML टैग्स के साथ, फिर वो आपका एरर क्रिएट हो जाता है. तो इसीलिए कुछ है इस तरह के सिंबल्स और कुछ इस तरह के करेक्टर्स हैं स्पेशल जो HTML ब्राउजर होगा वो HTML टैग्स के साथ ना उनको रिलेट करे. सो इसलिए एंटिटीज बनाई गई हैं सो दैट वो स्पेशल करेक्टर्स HTML में रहे. जो HTML एंटिटीज है वो हम इस तरह से लिखते हैं. वो एम्परसेंड साइन के साथ हमारी डिपिक्ट की जाती है, स्टार्ट होती है एंड देन द एंटिटी नेम एंड देन लास्ट में सेमीकोलन. सेमीकोलन इज मस्ट टू एंड अप द एंटिटी, अदरवाइज दैट पर्टिकुलर थिंग जो भी आप ये लिखेंगे ये सारी की सारी एज इट इज आपके वेब पेज के अंदर प्रिंट हो जाएगी जब तक आप लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाएंगे. एंड सिंटेक्स इज ऑफ एंटिटी इज दिस ampersand entity name and then semicolon. Okay, so let's begin with our first entity. Okay, our first entity is copy. Look first, copy, this entity, okay, this entity जो है इसको कॉपी एंटिटी बोलते हैं. ये एंटिटी आपने अपनी किसी वेबसाइट जब ओपन करते हैं किसी यूनिवर्सिटी की किसी कॉलेज की तो उसके सबसे लास्ट में ये एंटिटी जो होती है कॉपीराइट जिसको कहा जाता है ये उसके लिए उस सिंबल के लिए यूज की जाती है बिकॉज दिस सिंबल इज नॉट अवेलेबल इन आवर कीबोर्ड. ये कीबोर्ड में सिंबल अवेलेबल नहीं होता सो दैट्स व्हाई हम इसको एंटिटी में यूज करते हैं और इसकी एंटिटी का नेम होता है एम्परसेंड कॉपी. ओके, और सेकंड वन इज इसी तरह से हमारी एक और वेबसाइट में जो बेसिकली कॉपीराइट के साथ ही एक एंटिटी यूज की जाती है दैट इज ऑल राइट्स रिजर्व्ड एंटिटी भी जो होती है इट्स सिमिलर लाइक कॉपी में सर्कल के अंदर हमारा आर आता है बट इसी तरह से एंटिटी के अंदर जो है ऑल राइट्स रिजर्व की एंटिटी के अंदर हमारा आर आता है. तो ऑल राइट्स रिजर्व के लिए एंटिटी है REG. So look at this. Okay, so these two entities are very important in our website. Every website uses this entity. बाकी सारी entities अगर आप ना भी याद रखें अदरवाइज जो भी मैं इस YouTube वीडियो में आपको entities करवा रही हूँ वो सारी की सारी important है. मैं वही एंटिटीज करवा रही हूँ जो आप रेगुलरली वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं और करते हैं. अदरवाइज बाकी और भी एंटिटीज हैं बट दैट इज नॉट सच इम्पोर्टेंट जितनी ये इम्पोर्टेंट है जो मैं आज आपको करवा रही हूँ. सो दीज टू आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, कॉपीराइट एंड ऑल राइट्स रिजर्व. सो our next entity is of trademark.
ट्रेडमार्क भी अगर हम कोई वेबसाइट ऐसी क्रिएट करते हैं जिसमें हमें ट्रेडमार्क का सिंबल चाहिए है, तो ट्रेडमार्क के लिए एंटिटी है एम्परसेंड ट्रेड। So look, this is the trademark symbol. Okay, and now our next entity is basically our Indian websites contain our rupee sign. मोस्टली जो शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं वो डॉलर साइन डिपिक्ट करती हैं, बट इफ we want to make some website which is basically for Indian people, or basically if you want to publish it internationally, then it's also okay that we are mentioning our price in the Indian rupee. So Indian rupee के लिए कोई ऐसी entity नहीं है, alphabetic entity नहीं है, that is some coded entity. मतलब वो एक कोड है जो आपको याद रखना पड़ेगा, and that code is ampersand hash x20b9 and semicolon. Then look at the change, this Indian rupee sign. Got it? This Indian rupee sign is not available on a keyboard, although dollar sign is available on a keyboard, but this rupee sign is not available. So if हम अपनी वेबसाइट के अंदर कोई रुपीज इस तरह से मेंशन करना चाहते हैं विच इज इन द इंडियन प्राइस रुपी के साथ, देन वी हैव टू यूज दिस एंटिटी अमंग आवर प्राइस. ओके, so there are some other entities if you want to add playing cards symbol in your website. Playing card symbol like spade symbol, heart, diamond and club symbol. So there are entities for them also. So first of all, for spade we have ampersand and simply write spades, and then spade symbol is there. Okay, now the next playing card entity is heart. Hearts. S is mandatory among the entities of playing card. Look. Got it? Now, the next is diamonds. For diamonds, we have dimes. D-I-A-M-S. Dimes. Okay. And next is club. So, clubs. S is mandatory. I'm repeating, S is mandatory. If you are not, if you will not spell S after the spelling of any playing card entity like club, diamond, heart, and spade, if you will not apply S plural sign, then it will not print. It will create error like this red error. Okay. So you have to if you have to made it plural. So these are the basic entities which you use while making your website. Okay, one of the major and the most important website is our most important entity of website is NBSP. NBSP is for non-breakable space. Okay, now look, here we add a break tag, and I mention here a paragraph. I will copy this content
I will paste it in this. Control V. Okay. So non-breakable space जो होती है हमारी entity. Look, if paragraph, look, this paragraph is only end with when. But if we want that when and used come in a single line, कि when और use एक single line में आए, चाहे when इसके नीचे आए, इसके साथ यहाँ पे आ जाए, ये स्पेस एम्प्टी रहे, चाहे यूज इसके साथ चल जाए, ये स्पेस एम्प्टी रहे, we don't even bother about this, but we want when and use together with each other. So in this we add when, we add n b s p space within use and when. Now look at the change. When and use come in a single line. This is basically used for those paragraphs जिसमें हमारे कुछ पॉपुलर पर्सनालिटीज जो होती हैं उनके नेम्स लिखने होते हैं, लाइक डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर. So we want Dr. Rabindranath Tagore in a single line. So we add this entity NBSP within the name of Dr. Rabindranath Tagore. Like I want my name, if I write my name Janvi, so it comes to the next line, or it comes to some another like this, but it will not. Wait, if I write Janvi here, okay, now look, paragraph will change and it comes to the end one, end part of the paragraph. ठीक है. एंड इसके बाद इफ मैं राजपूत लिखती हूँ या कोई और चीज मेंशन करती हूँ, सो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा. This one, it comes in the next line, and it doesn't create a good impact because name should be in a single row or with a single entity. So what would I do? What will I do? I will add entity NBSP within my name. So now my name will come in a single line. Look. Okay, got it? This is the major entity which every good web developer use within its web page. Now, one more important property or characteristics you can say of this entity is, जैसे हम HTML और AND के बीच में we have only one space which is by default due to the keyboard key space. So if we enter or we add or we press space bar more and more so that we can get 5 to 6 spaces within HTML, look, it doesn't change. It means our browser doesn't support the spaces added by more than one spaces added by our spacebar. So what we will do in this category? We will mention this entity NBSP that much time we want the space between this. मतलब हम HTML entity जो है हमारी NBSP that is non breakable space, वो हम उतनी बार ऐड कर देंगे जितनी बार हम HTML और AND के बीच में स्पेस चाहते हैं. So if we want 5 spaces between this, so we add NBSP 5 times. Now look, it will increase space between HTML and AND. That is the result of this entity.
So this entity is the most important entity of HTML or web development. So these are the entities which are most important of any website. ये एंटिटीज जो आज हमने सीखी हैं, ये एंटिटीज सभी वेब डेवलपर्स जो हैं वो मोस्टली अपनी HTML वेब पेजेस में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट यूज करते हैं. और भी बहुत सारी एंटिटीज हैं, बट दीज एंटिटीज आर द most important one. So there are some another entities which is the important in this category, and they are, let me recall you also the another entities. Okay, so another entities, if you want the left arrow, right arrow which is not present in our keyboard, so उसके लिए हमारे पास entity होती है ampersand. लेफ्ट है तो L आ जाएगा और एरो इज AR. लुक, ठीक है. और इफ यू वांट की राइट एरो, सो सिंपली बस R आ जाएगा, बाकी एरो इज AR, ARR. दिस सिमिलरली अपवर्ड डाउनवर्ड्स, तो डाउन के लिए D ARR, अपवर्ड के लिए UARR. ओके, सो हम सिंबल्स ये कई बार अपनी वेबसाइट डेवलप करते करते कुछ इस तरह का मतलब बीच में कुछ ऐड ऑन करना पड़ जाता है जिसमें हमें एरोज ऐड करने पड़ते हैं. सो ये एरोज हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं मिलेंगे हमें, सो इसीलिए इनको हम एंटिटीज के थ्रू जो है वो अपनी वेब पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हैं. सो करेंसीज भी होती हैं कई, लाइक पाउंड है तो POUND, पाउंड. Pound is there, pound currency symbol is there, and cent is there, CENT, cent is there. Another currency, yen is there. This is yen. And one other important entity is, these are the currencies which is mostly used by foreign websites. अगर हमने वेबसाइट को क्रिएट करनी है तो हम अपनी इंडियन रुपी की क्रिएट करेंगे, या फिर डॉलर साइन तो ऑलरेडी हमारे कीबोर्ड पे होता है प्रेजेंट. सो इफ डॉलर साइन आप क्रिएट करना भी चाहते हैं तो डॉलर साइन जो है वो आपका डॉलर साइन, ये डॉलर साइन. ओके, सो एक हमारे पास एक और एंटिटी होती है जो आप मोस्टली कहाँ पे यूज करते हो, जब आपने फॉर्म्स वगैरह क्रिएट करते हो, कोई ऑनलाइन फॉर्म्स क्रिएट करते हो, तो साइड में एक क्रॉस मेंशन होता है लाइक दिस. ये जो आपको क्रॉस नजर आ रहा होगा मेरा यहाँ पे, ये वाला क्रॉस जो होता है, लाइक दिस क्रॉस एंड दिस क्रॉस, जो भी मतलब क्रॉस होता है जो उस पर्टिकुलर थिंग को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है, वो वाला जो क्रॉस होता है क्लोजिंग सिंबल, वो वाला क्रॉस जो होता है वो हम अगर यूज करना चाहें तो हम मल्टीप्लीकेशन का सिंबल यूज करते हैं क्रॉस करने के लिए, बट मल्टीप्लाई का सिंबल भी कुछ इस तरह से नहीं होता, वो भी कुछ इस तरह से होता है, वो हम यूज नहीं कर सकते. तो क्रॉस साइन यूज करने के लिए यहाँ हम स्मॉल एक्स यूज करते हैं, ठीक है. तो बट वो स्मॉल एक्स कई बार हमारा ब्राउजर जो होता है वो उसको एज अ करेक्टर उठा लेता है, तो करेक्टर ना पिक करे तो उसके लिए भी एक एंटिटी बनी हुई है विच इज एम्परसेंड टाइम्स. सो ये हमारा क्रॉसिंग सिंबल है, मतलब उस पर्टिकुलर वेबसाइट से हमारे को निकलने के लिए, दिस वन. ओके,
सो दिस वन इज, अगर हम जब ये अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, और जब हम इसके ऊपर कोडिंग के थ्रू कुछ सेटिंग करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन पर्टिकुलर विंडो डिस्प्ले जो होएगी हमारे उस टाइम पे, हमारे पास जो डेस्कटॉप पे विंडो हमारी ओपन हुई होगी, दैट विल बी क्लोज्ड। ये वो वाला क्लोजिंग सिंबल है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन। सो हियर हम अपना ये टॉपिक जो है वो फिनिश करते हैं। सो यही थी सारी की सारी HTML एंटिटीज जो बेसिकली हम अपने वेब डेवलपमेंट में, अपने वेब पेजेस को डेवलप करते वक्त यूज करते हैं, और यही है वो, मतलब जो मोस्टली हम यूज करते हैं। बाकी जो है वो हम यूज नहीं करते। देयर आर ऑल्सो, मैं ये नहीं बोल रही कि इसके अलावा और कोई एंटिटीज नहीं है, बहुत सी एंटिटीज है ऐसी जो HTML ने हमारे को जो है प्रोवाइड करवाई हुई है, कि ताकि हम जो है वो कुछ इस तरह से सिंबल्स अपने वेब पेज को, वेबसाइट को जो है अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज कर सके। बट जो हम यूज करते हैं जनरली और डेली लाइफ और डेली वर्क में, वेबसाइट के वर्क में, डिपार्टमेंट में जो बेसिकली यूज की जाती है, वो सिर्फ यही एंटिटीज यूज की जाती है। सो ओके, यही एंटिटीज है। बस इतना हमेशा याद रखना कि एंटिटी एम्परसेंड साइन के साथ स्टार्ट की जाती है और सेमी कॉलन के साथ फिनिश अप होती है। सो ओके गाइस, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो। इफ आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट आप आने वाले मेरे अपकमिंग लेक्चर्स जो हैं वेब डेवलपमेंट के, वो आप में से सीख सकें। आई होप कि आपको ये लेक्चर और ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, बाय बाय गाइस।